closely related to another species of amphibians found in Africa, which shows that the species evolved much before Indian subcontinent separated. Cabinet Secretary asked states to take steps on a war footing to trace attendees of Tablighi Jamat congregation in Delhi. There are reports that nearly 200 of the delegates have been found corona positive, 10 have died. Health Ministry too admits that sudden spike in corona positive cases in the country is largely due to affected Tablighi congregation attendees. Ask people to take adequate preparations and precautions to halt the spread. World Health Organization praises Prime Minister Modi for initiating landmark measures to help the poor and underprivileged sections during corona crisis. India sees largest single-day spike in corona cases. Total number of active cases reaches 1,764 with 50 deaths. In worst affected Maharashtra, corona positive cases are more than 300. Tamil Nadu also sees biggest jump in positive cases due to Tablighi attendees. Ram Navami today, people offer prayers staying at home. Temples remain empty or closed. President, Vice President and Prime Minister greet people on the occasion. War against corona continues across the world. Number of infected people crosses 9 lakh mark. US alone, total number of positive cases crosses 2 lakhs. US registers nearly 900 deaths in a single day, while UK registers more than 500 casualties in last 24 hours. Welcome to this bulletin. I'm Shubhendu Ghosh. The COVID-19 outbreak in India due to infected members of Tablighi Jamat has become grave. More than 200 delegates have been reported corona positive so far. At least 10 people who had died had attended the congregation in mid-March in Delhi. Centre has taken up the challenge of identifying and tracking the delegates and the people with whom they came into contact to contain the damage. In this regard, Cabinet Secretary Rajiv Gauba yesterday held a high-level meeting with Chief Secretaries and DGPs of the states through video conferencing and asked them to track the Jamaat members on a war footing so that preventive measures can be taken up to contain the infection. The Health Ministry has also confirmed that sudden spike in number of corona cases in the past 24 hours is largely due to the infected delegates from the congregation of Tablighi Jamat in Delhi. These delegates then spread across the country, coming into contact with thousands of other people, multiplying the infection. Meanwhile, Jamiat-e-Ulema-e-Hind President Maulana Arshad Madani has appealed to people to follow social distancing religiously. मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस मर्द का कोई इलाज अब तक नहीं दरियाफ्त हो सका, इसलिए एहतियाती तदबीर में सबसे ज़्यादा मौसर तदबीर यही है कि लोग किसी जगह इकट्ठे न हों। मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, हिंदुओं से भी कहूँगा कि इस तरह के वाक़यात न होने चाहिए। And Kerala Governor Arif Mohammed has condemned the huge congregation during the lockdown in national capital. He said this is not a simple crime, it's a crime against the nation and humanity. I feel very sad. I think whatever has happened there, absolutely despicable. In fact, if I use words like criticism, deploring, condemnation, they are all insufficient to convey the real feelings which this obnoxious violation of the law, of the regulations, of the lockout evokes in your hearts. This is not a simple crime.
This is crime against nation, crime against humanity. WHO has praised Prime Minister Narendra Modi for his efforts to inclusively fight COVID-19 pandemic. World Health Organization Director General gave example of PM Modi to the world the way India has implemented social welfare measures for the poor to combat economic consequences during COVID-19 pandemic. Many countries are asking people to stay at home and shutting down population movement, which can help to limit transmission of the virus, but can have unintended consequences for the poorest and most vulnerable people. I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women, and free cooking of gas for 80 million households for the next 3 months. Many developing countries will struggle to implement social welfare programs of this nature. For those countries, debt relief is essential to enable them to take care of their people and avoid economic collapse. As the nation completed 7 days of lockdown, the active cases of COVID-19 reached 1,764 in India. 150 people have been cured of the infection. They've been discharged from hospitals, while 50 people have lost their lives due to the virus. Centre and states are working together to contain the spread of the virus and trace contacts of the affected persons. Briefing media, Health Ministry has said that as many as 6 lakh people are living in makeshift camps. Over 25 lakh migrant workers who are rushing home were provided with food at relief camps. Centre has also said 47,951 tests have been conducted till date. There are 126 labs in ICMR network, including 51 private labs that have been approved for testing COVID cases. That's the latest data in the fight against COVID-19. Meanwhile, Union Health Minister Dr. Harshvardhan reviewed the action taken and the preparedness on novel coronavirus with Indian Medical Association (IMA) at a high-level meeting through video conferencing in New Delhi. During the meeting, he reviewed the preparedness and concerns of the medical staff from across the country related to COVID-19. Minister reviewed the status of preparedness in terms of availability of beds, isolation wards, lab readiness for high test volumes. He said IMA and its regional members will make a task force and take proactive role in helping the official machinery at the state, district and local levels. Union Health Minister Dr. Harshvardhan has stated that prevention, containment and management of COVID-19 are being monitored at the highest level and various actions have been initiated in collaboration with the states. In an exclusive interview to DD News, he reiterated the resolve and said the government is committed to preventing the spread of COVID-19. It will take all extreme and preemptive measures available to stop the spread. We have a well laid down criteria which is quite thorough and comprehensive, where we are even testing every patient who has an acute respiratory illness and is admitted in a hospital. He is also being tested. It's not only a person who has a history of contact with a COVID affected or an international travel, but it is also a person who has an acute respiratory thing. The minister also said that India is following a laid down criteria to do the testing. Community surveillance that we started on 17th of January. Can you believe it, when I am talking to you today, we have more than 5 lakh people in this country who are under community surveillance, and our health system, with the help of our other you can say grassroots workers like surveillance officers and rapid response teams, etc., and ASHA workers, we are keeping a, you can say, very close watch on these people.
If he or she is an old person, so virtually it's a daily contact with them. So a watch is being done with the help of all the officers of the and the administrative machinery. We are being helped by the Home Ministry people, we are being helped by the DMs, we are being helped by, it's not only the health department, it's the whole government which is working. The festival of Ram Navami is being celebrated across the nation. President Rajnath Kovind, Vice President Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi greeted the nation on the auspicious occasion of Ram Navami. However, due to the lockdown, devotees offered prayers at their homes while temples remained shut. In the national capital, the famous Lakshmi Narayan temple was seen empty. And temples in Uttar Pradesh's Prayagraj and other places also remained closed due to the lockdown. In Mumbai, people maintained social distancing while offering prayers outside the temples. Sikh spiritual singer Nirmal Singh, a Padma Shri recipient, died of coronavirus in Punjab early this morning. Nirmal Singh was a former Hazuri Ragi at the Golden Temple. Singh had recently returned from a trip abroad and was admitted to hospital after he complained of breathlessness and dizziness on March 30th. Nirmal Singh received Padma Shri in 2009. He was known for his knowledge of all 31 rags in Gurbani of the Sikh holy book Guru Granth Sahib. The Press Information Bureau of Ministry of Information and Broadcasting has set up a portal, COVID-19 Fact Check Unit, which will be operational from morning of 2nd April 2020 to receive messages by email and send response in quick time. The Ministry of Health has set up a technical group comprising professionals from AIIMS and other hospitals to clarify any doubts in the minds of public on any technical aspect of COVID-19. Press Information Bureau will release a daily bulletin at 8 p.m. every day to inform regarding government's decisions and developments and progress on COVID-19. The first bulletin was released on Wednesday at 6:30 p.m. And those are some of the important steps taken by the government. A portal has been launched to address the concerns, grievances, questions of masses. It will be run by doctors from All India Institute of Medical Sciences and other medical institutions. It will also every day release a medical bulletin on the update on coronavirus. The war on coronavirus continues throughout the country. While the centre, the state governments together are taking precautionary measures, common folk are also working at their level. On the other hand, awareness about corona is being spread in various states. Non-governmental organizations, NGOs, local women in Kullu of Himachal Pradesh got together and sanitized public places, roads and shops and homes all by themselves. In Bardoli, police in Surat of Gujarat urged people to stay in homes and follow the lockdown rules. Bardoli police spread awareness by singing songs outside the homes. The local people also joined them and cheered the police. 100 homeless people have been kept in Dimapur District Sports Complex of Nagaland. Many organizations are supplying essential items to them. Naval Dockyard Mumbai has designed and developed its own handheld IR infrared-based temperature sensor for undertaking screening of large number of personnel at the entry gates of the yard, reducing the load on security sentries at the gate. The instrument has been manufactured under ₹1,000 through in-house resources, which is, remember, a fraction of the cost of the temperature guns available in the market these days. Since the outbreak, the non-contact thermometers or temperature guns have become scarce in the market and are being sold at a rather high cost. And contributing towards efforts to contain COVID-19 pandemic, and as a gesture of goodwill towards local population under distress during the nationwide lockdown, Goa Naval Area undertook distribution of essential supplies yesterday. The headquarters Goa Naval Area coordinated with Councillor of Mangor Hill and distributed critical supplies to families of daily wagers, migrant labourers, low-cost income families at Gandhinagar near Ayappa Temple, Varunapuri. In addition, provisions were handed over to Milind Nayak,
Minister for Urban Development and Social Welfare, for distribution to families in need. Now, as the nation fights against the outbreak of coronavirus, people from all over the nation support to fight against the virus. A 7-year-old from Mizoram also lent a helping hand in supporting the fight against the virus by contributing his entire saving. This is the picture of the young boy, Rome Lalumoa Sanga from Kolasib, Venglai. He donated this packet full of money, rupees 333, all his savings, to the village level task forces in the war against dreaded COVID-19 pandemic. And Mizoram Chief Minister Zoramthanga lauded the contribution made by Romel. In a tweet, he expressed gratitude for his contribution, called him a hero for his generous contribution. Similar stories of hope and resilience are emerging. The country's first ambulance woman driver and ambulance man are also playing their role in helping the needy during this lockdown. Popularly known as the Kalia couple, Himanshu Kalia, the ambulance man, and Twinkle Kalia, the country's first ambulance woman driver, are seen providing food to the needy during the lockdown in various areas of the national capital. The mission of the Kalia couple is that no one should go hungry, starve, or sleep hungry. जब से ये कोविड-19 बीमारी आई है और जब से लोगों को रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए और कारोबार में जो दिक्कतें आई हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा वंचित हो गए हैं, उन लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं जो इस समय कुछ सेवा करके इनके बच्चों को और इनके परिवार को खिला पाएँ। और हमारी ये कोशिश है, एक पहल है, जो हम पिछले एक हफ्ते से इसी तरीके से अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग झुग्गी, अलग अलग बस्तियों में जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि जिसको भी खाना खाना है और ये भूख ही है। जब भी हम अनाउंसमेंट करते हैं तो कम से कम 400-500 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब ज़रूरत है। Commendable effort there. Some global update. More than 9 lakh cases of coronavirus have been officially detected worldwide since the pandemic emerged in China late last year. Now, of these 9 lakh infections, they include 45,719 deaths have been recorded in 187 countries, territories globally, with over 2,03,000 cases and 4,476 deaths in the United States alone, where the pandemic is spreading rapidly. Italy, with 1,10,574 detected cases, has the highest number of casualties, with over 13,150 deaths. Spain has 1,02,136 cases, including over 9,000 deaths. China, the position has stabilized a bit, 81,554 confirmed cases and over 3,300 deaths. And World Health Organization said it was deeply concerned about the near exponential escalation of the new coronavirus pandemic. As the number of deaths doubled in a week, WHO chief urged citizens around the globe to stand together to fight COVID-19. WHO also warned about the serious social, economic and political consequences in the African region that could turn up if confirmed cases of COVID-19 started spreading. WHO chief urged governments to implement social welfare measures to ensure that the vulnerable people have access to food during the crisis and called for debt relief for poorer states. Meanwhile, he also mentioned that a safe vaccine is thought to be some 12 to 18 months away, about a year away, and recommended people to wear masks who are infected or are health workers. A Russian military plane carrying medical supplies has arrived in the US. The plane landed at New York, the epicenter of coronavirus outbreak in the United States. Russia had previously sent medical supplies and experts to coronavirus hit Italy as well as part of humanitarian efforts. United States now has more than 206,000 confirmed coronavirus cases, by far the highest in any country, and over 4,500 casualties. National Investigation Agency NIA filed an FIR to probe the terror attack on a Gurdwara in Afghanistan's capital Kabul last month. The case was registered under various provisions of Indian Penal Code and anti-terror law. Banned terrorist organization Islamic State, Khorasan Province ISKP had claimed responsibility for this attack. The agency said, as per the preliminary investigation, one person from
Trikaripur, Kasaragod, Kerala, and others who had joined ISKP are suspected to have been involved in the attack. This is the first case of its kind which NIA has registered, as the recent amendments in NIA Act have empowered the agency to investigate terror cases which are committed at any places outside of India as well against the Indian citizens or affecting the interests of India. 27 people were killed in this attack. Some sports update. Wimbledon has been cancelled for the first time since World War II because of coronavirus pandemic. The tournament was due to be played between June 29th to July 12th. The entire grass court season has been abandoned, and there will be no professional tennis anywhere in the world until at least 13th of July. Wimbledon is the latest major summer sporting event to be called off. Euro 2020, Tokyo Olympics were postponed for 12 months. It follows the postponement of the French Open that was due to begin in May this year but had to be rescheduled between September and October. And with the Premier League at a standstill along with the rest of the sporting world due to coronavirus pandemic, Liverpool players, manager Jurgen Klopp and backroom staff checked in and gathered online ahead of a remote yoga session, echoing the club's mantra to stay home, save lives, in line with the overall message to keep in touch and stay active together with family and friends. The players joined online one by one. English soccer is suspended until at least April 30th due to coronavirus crisis, but the current season can be extended indefinitely, the English game's governing body said in a joint statement in March. And UEFA bowed to the inevitable on Wednesday and suspended all Champions League and Europa League soccer matches until further notice due to the coronavirus pandemic. European soccer's governing body also said all national team games scheduled for June have been postponed, including playoff matches for Euro 2020 that have been moved to 2021. The finals of Europe's elite Champions League competition, second-tier Europa League and Women's Champions League, all of which are scheduled for May, had already been postponed. A mini tournament to decide the Champions League and Europa League is expected to be one option put forward to ease fixture congestion caused by the coronavirus crisis. Wednesday's video conference call of UEFA's 55 member associations included a broad-ranging discussion on the crisis and what options might face the game in the coming weeks. And celebrities have taken to social media to ask fans to appeal to them to stay safe amid coronavirus scare. They urge people to stay at home and follow the precautionary measures to fight against coronavirus pandemic. தேசிய வணக்கம். இன்றைய பாரதத்தின் பிரதம பிரச்சனையான கிருமி யுத்தத்திலிருந்து மக்களை மீட்டெடுக்க நமது பாரத பிரதமர் மேற்கொண்டிருக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு வழிநடத்தும் தமிழக அரசுக்கும் செயல்படுத்தும் மக்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வணக்கமும் நன்றிகளும். உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த கொடிய நோயிலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிப்பதற்காக செய்யும் சத்தியாகிரகமே இந்த 21 நாள் ஊரடங்கு சட்டம். இந்த 21 நாளில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, ஒரு நல்ல விஷயத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அது இயல்பாகவே நமக்கு மாறிடும். அல்லது ஒரு கெட்ட விஷயத்தை நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதுவும் நம்ம இயல்பிலிருந்தே போயிடும். உதாரணத்துக்கு குடிப்பழக்கம். இந்த குடிப்பழக்கத்தை 21 நாள் நம்ம கைவிட்டுட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கப்புறமா அந்த பழக்கமே நமக்கு இல்லாமல் போயிடும். போதை குறைவாகணும்னா தண்ணி அடிக்கலாம், நிறைய வேணா தியானம் பண்ணலாம். தியானம் இஸ் நத்திங் பட் இன்வர்ட் ட்ராவலிங், உள்நோக்கி உள்முகம் நோக்கி ஒரு பயணம். ஒரு சாதாரண மிஷின் கூட கொஞ்ச நாளில் பழுது அடைந்துடும். ஆனால் இந்த மிஷின், மனுஷங்கிற அந்த மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக நமக்காக உழைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? கண்ணை திற உலகம் தெரியும், கண் மூடு நீ தெரிவாய். அப்படி கண்ணை மூடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் உங்களுக்காக எவ்வளோ நாளாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மிஷினுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன? ஒரு மூச்சு பயிற்சி, அப்புறம் உடலை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சிருக்கிறதுக்கு தேவையான பயிற்சிகள். இது எல்லாத்தையும் இந்த 21 நாளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நமக்கு ஒரு இயல்பாகவே மாறிடும். அதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட்டிங் பாசிட்டிவிட்டி, நல்லெண்ணங்களை மட்டுமே பரப்புதல். அதாவது இந்த நோயிலிருந்து உலகம் விடுபட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, நாடும் நாமும் நலமாக இருக்கிறோம். இப்படி நம்ம அடிக்கடி நம்ம மனசுக்குள்ளே சொல்லி பார்த்துக்கணும். உண்மையிலேயே இந்த நோயிலிருந்து விடுபட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதை நினச்சிக்கிட்டு இந்த நோய் நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் அமைதியாக இருத்தல். அரசு சொல்கிற விஷயங்களை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது மட்டுமே நம்மளுடைய கடமை. மக்களாகி நம் ஒத்துழைப்போடு விரைவில் இந்தியா இந்த நோயிலிருந்து மட்டுமல்ல, எந்த போர் வந்தாலும் அதில் வென்று மெழுகுவது ஒளிர்வது நிச்சயம். ஜெய் ஹிந்த்.
दोस्तों, मुश्किल कभी बताकर नहीं आती है और ना ही उससे भागा जा सकता है। आज हमारे सामने मुश्किल है और हमें उसका सामना करना है। इसका सामना हम कर सकते हैं घर पर रह के। अगर हमारा काम ज़रूरी ना हो तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकले। हम खुद की जान ही नहीं, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, जिनका घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर्स, उनका काम और ना बढ़ाएं, उनका काम और मुश्किल ना करें, उनको मदद करें घर पे रह के। इसीलिए प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य धर। आई एम द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। दूरदर्शन के सारे दर्शकों से मेरी ये अपील है, मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मुश्किल घड़ी में कृपया करके घर से बाहर ना निकले। हर घंटे साबुन से अपना हाथ धोते रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खासकर बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। गवर्नमेंट, पुलिस प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल, सफाई कर्मचारी ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमें सेफ रखने के लिए। इनकी मेहनत, इनके बलिदान का मान रखें और कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो दूरदर्शन देखते रहिए। धन्यवाद एंड जय हिंद। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े हों। आपसे अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करें। देशवासियों से मेरी अपील है कि कोरोना वायरस को हराने की इस मुहिम में सरकार का साथ दें। सरकार आप तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। 21 दिन के इस लॉकडाउन को पूरी तरह पालन करें। कोरोना को हराने में सरकार का साथ दें। सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाब बनाएं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में सारे देशवासियों से मिलकर सहयोग करने की बहुत जरूरत है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करें। Important update that has come in. Prime Minister Narendra Modi today is holding video conference with chief ministers of states to review action against novel coronavirus. And various important aspects of the interaction are related to testing, isolation, quarantine. And we see in those visuals Prime Minister Narendra Modi interacting with chief ministers of different states, union territories. My colleague Sudhakar Das is joining us with more detail. Sudhakar, Prime Minister once again connecting with stakeholders, this time connecting with the chief ministers of state. Very crucial time when the centre and states must work together to check the spread of coronavirus. जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और शुभेंदु, हम सबको पता है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं और एक जो पूरी लड़ाई है, हमको पता है कि एक अहम चरण में है। पिछले 1-2 दिनों में मामले तेजी से बढ़े भी हैं, तो ये चिंता की बात भी है। लेकिन साथ ही साथ जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छी चीज ये भी है कि जो लॉकडाउन है 8 दिन हो चुके हैं और उसमें 13 दिन और बचे हुए हैं, तो लॉकडाउन के को एक तरह से लोग समर्पण के भाव से उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इस अहम वक्त पर अब इसके प्रसार को रोकने के लिए, किसी तरह से इस महामारी से बचाव के लिए क्या कुछ आवश्यकता है, क्या कुछ जरूरतें हैं, एक तरह से प्रधानमंत्री न सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे हैं तमाम राज्यों का, बल्कि वो सुझाव भी ले रहे हैं। खासतौर से ऐसे राज्य जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, केरल की बात हो, इस तरह के तमाम राज्य जो हॉटस्पॉट्स बने हैं उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। तो साथ ही साथ जो पहले राज्यों से आग्रह किया गया था कि कोविड-19 के उपचार के लिए अलग से अस्पताल बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाए, जो मेडिकल सप्लाईज है वो निर्बाधित होकर चलती रहे, दवाओं का उत्पादन चलता रहे, तो जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे। इन तमाम चीजों को लेकर क्या राज्यों को किसी तरह की दिक्कत है, और वो तमाम चीजें तो वो काफी महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम की तरह इस वक्त काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एक तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्यों से ये कहा है कि जो टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, आइसोलेशन है और क्वारंटाइन, ये जो 4 चीजें हैं काफी महत्वपूर्ण है और इस पर अब फोकस करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और हर वक्त एक तरह से क्योंकि एक लगातार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर इससे तैयारी में जुट जाने की जरूरत है, तमाम चीजों को करने की जरूरत है। हमने कल भी देखा था कि कैबिनेट सचिव ने राज्यों से बात की थी, चाहे तबलीगी जमात का मसला हो या अन्य जो उपाय किए जा रहे हैं उसको लेकर। तो उसके बाद प्रधानमंत्री की जो पूरी बातचीत है, न सिर्फ पिछले 10 दिनों में जो पूरी स्थिति बनी है,
पूरे देश की क्या स्थिति रही है। हमें जानकारी मिली है कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं डीजी ICMR हैं, उन्होंने पिछले मीटिंग की तरह भी इस मीटिंग में भी पूरी स्थिति को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया है। तो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है शुभेंदु, हमको ये समझना पड़ेगा पूरी दुनिया में जो इसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं, जो पूरी स्थिति बनी है, उसके साथ साथ देश के सामने जो मौजूदा चुनौतियां हैं, उन तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। बेहद अहम बैठक। शुभेंदु जी सुधाकर, जैसे आपने बताया कि जैसे विश्व भर में हो रहा है वैसे देश में भी कुछ एपिसेंटर्स उभर के आए हैं जहां पे केसेस ज़्यादा हैं, और जब सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ऐसी मीटिंग में बैठते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, जहां ज़्यादा ज़रूरत है वहां रिसोर्सेज का एलोकेशन उसी हिसाब से करें, इस तरीके की डिसीजंस आसानी से किए जा सकते हैं। My colleague Sudhakar giving us update on Prime Minister's meeting with chief ministers of all states. I think we lots of phone contact with my colleague Sudhakar. But these visuals of Prime Minister Narendra Modi interacting with the chief ministers of different states. My colleague who's covering the event informed that the focus, of course, is on testing of COVID-19 cases, contact tracing, taking a stock of resources, isolation facilities, quarantine facilities, crucial moment when the centre and the states must work together to ensure that the fight against COVID-19 is a united front. My colleague Sudhakar is back online. Sudhakar, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्योंकि एपिसेंटर्स कुछ एक बने हैं देश में जहां केसेस ज़्यादा हैं COVID-19 के, तो जब सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं तो रिसोर्सेज का एलोकेशन बेहतर तरीके से हो सकता है। I think we haven't been able to connect with Sudhakar, but these visuals are of Prime Minister Narendra Modi interacting with chief ministers of different states. Home Minister Amit Shah is also present in the meeting. In the visuals, we also saw that the offices of Prime Minister and Chief Minister, these leaders are also maintaining social distancing within their workspaces, but the focus areas are contact tracing, isolation facilities, updation of resources available at hand as far as ventilators or quarantine facilities are concerned. And at this stage, testing is also in a very crucial stage, and that is the focus of the interaction that is taking place between chief ministers of all the states and Prime Minister Narendra Modi. This meeting took place a short while ago. These are the visuals that you're watching of the meeting that took place between Prime Minister and Chief Minister. Sudhakar, are you back online with us? जी शुभेंदु जी सुधाकर, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्योंकि एपिसेंटर्स कुछ उभर के आए हैं जैसे विश्व भर में वैसे देश में भी, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन बेहतर तरीके से हो सकता है जब प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री साथ में बैठ के बात करें। जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से रिसोर्सेज की जहां तक बात है, एक तरह से प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं, केंद्र ने पहले ही कह दिया है कि जो SDRF फंड है करीब 29,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है इस साल राज्यों के लिए, और उसकी एडवांस किस्त भी राज्यों को जल्द से जल्द दी जा रही है। तो पहली तो चीज ये है। दूसरी, जहां तक PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात है, मास्क की बात है, उसकी भी सप्लाई लगातार राज्यों को भेजी जा रही है। एक तीसरी चीज जो अहम है कि लोगों की जो खासतौर से स्वास्थ्य कर्मी है उनकी ट्रेनिंग की बात है और किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि एक अलग कोविड के लिए अस्पताल की बात हो रही है, उसके जरिए उपचार की बात हो रही है। तो उस तरह से कोशिश की जा रही है कि केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ इस स्थिति का मुकाबला करें। लेकिन दूसरी जहां तक मुद्दा है, निश्चित तौर पर जो हॉटस्पॉट्स बने हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, केरल की बात हो, या फिर इस तबलीगी जमात का जो नई चिंता उभरी है, उनके जो तमाम लोग राज्य के देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, तो वो जो हॉटस्पॉट्स हैं उनकी पहचान करने, वहाँ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाने और फिर साथ ही साथ क्वारंटाइन करने या आइसोलेट करने की जो बात है, उन तमाम मुद्दों पर निश्चित तौर पर इस बैठक में जो इस वक्त बैठक हो रही है, चर्चा चल रही है। और ये एक बड़ी बैठक भी है। आज की बैठक में हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं शुभेंदु, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम और लोग भी इस बैठक में शामिल है। तो एक बड़े स्तर पे एक केंद्र और राज्य मिलकर इस बड़ी चुनौती के समय एक टीम की तरह कैसे काम करे, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है और काफी अहम बैठक। शुभेंदु
जी सुधाकर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, हम जानते हैं तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं कुछ इन्फेक्टेड हैं और देश भर में वो लोग गए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको प्रमुखता से उठाया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि जो एक स्पाइक हुआ है नंबर में, जो बढ़ोतरी हुई है कंफर्म केसेस में, उनका कारण काफ़ी हद तक तबलीगी जमात के जो मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरीके की इश्यूज़ भी डिस्कस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको स्टेट्स के साथ इंटरैक्ट करना होगा, सारे स्टेट्स के साथ जहाँ की वो मेंबर्स गए हों। All right, we're trying to connect to my colleague Sudhakar Das, who was giving us update on Prime Minister Narendra Modi's interaction with the chief ministers of different states and union territories, and issues in focus, scaling up the testing of COVID-19 cases, ensuring adequate quarantine and isolation facilities, also proper management of resources available at hand. So those were some of the focus areas of Prime Minister's interaction with the chief ministers, also in series of interaction with different stakeholders to make sure that the spread of COVID-19 can be contained in the country. With those updates, we conclude this bulletin. Namaskar.